हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप खुश हो। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके इंडियाज रोल इन डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड। तो देर देर से तो शुरू हो गया, 16 seconds लेट। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियाज रोल कैसे यूजुअली प्ले करता है with reference to Western nation, as well as with reference to World Trade Organization, with reference to International Monetary Fund, with reference to the G20 summits, and with reference to the Eastern nation, or you can say that with reference to US and the British, or we can say that the nations who usually plays a very important and crucial role in the Second World War। ओके, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर आशा करता हूँ कि आप यू विल डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल and will receive the latest updates regarding this channel, and I hope you will definitely enjoy the session with how we will be shaping the world, how we will be a mediator with the world and with Russia and China as well as the Western nations. So here it plays a very important and crucial role about the order. We can say that when we disorder something, we just want to reorder that, such that the governance will be the governance will run smoothly, right? In the fashion, in the similar fashion, if we disorder the nations, then how we can make it reorder, how we can make the world united. So that's the reason why Modi ji has already spoken in the United Nations General Assembly about Vasudeva Kutumbakam. All the worlds are in one nation, all the world's countries are in one family. That's the reason why he has said about Vasudeva Kutumbakam. तो इन सभी के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं इस वीडियो में खाली जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। विल बी डिस्कसिंग द क्रूशियल पॉइंट्स व्हिच यूजुअली shapes a new policies in reference to the countries, in reference to the Western countries, as well as Ukraine-Russia war, that usually signified or highlighted some of the certain things, right? I am from the mission IAS Learn With Integrity, and we will be learning the certain points which are even prior important. So here are the points, and we will be here I have fetched the uh, snapshot of the Hindu editorial of India's role in a disordered nation. Here you can see how India, how it, what are the key united points or key issues to of unity. We can say that what are the key issues of unity which usually govern the nations, governs the policies, as well as the country's socialism, equality, and right to justice. So these things are even been displayed, these things are even been formulated here. I hope you will definitely have the points illustrated in the सेशन। आशा करता हूँ कि आप सारे पॉइंट्स देख सकते हो। पहला पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। व्हेन द यूनाइटेड नेशन, व्हेन द यूनाइटेड countries are not at all governed by their own perspective laws, by their own policies, हर एक कंट्री का अगर ओन पॉलिसीज रहेगा तो फिर क्लाइमेट चेंज कैसे यूजुअली अंतर्गत आ गया, फिर क्लाइमेट चेंज कैसे कंट्रोल में आएगा। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, इशू बन सकता है इन रेफरेंस टू द ecosystem generation with reference to the sustainability uses, sustainability resource use. This is what the global institute of institution of global governance has failed in this scenario. Means they have failed in that, I can even say that. Let me take the leisure point. Here first number point, in this first number point we can say that climate change, which has reference to the institution of global governance, failed to unite the world. Summit after summit produced more costly or mostly hot air in trying to resolve the global climatic crisis. This is what the one point or the first number point which usually illustrate about the क्लाइमेट चेंज क्राइटेरियाज। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल यूनिटी। ग्लोबल यूनिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरी नंबर पॉइंट में यूजुअली आता है मिलियंस ऑफ सिविलियन हैड डाइड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, मिलियंस ऑफ सिविलियन टू सबमिट, और वी कैन से दैट the war ended with 2 nuclear bombs to terrorize the Japan government with submission and erasing 2 Japanese cities, killing thousands of civilians, never against the victory of own. ग्लोबल यूनिटी हैज आल्सो फेल्ड इन दिस। की इश्यूज के बारे में सेकेंड नंबर भी फेल हो गया है, क्योंकि द सेम सिचुएशन हैज अराइज्ड इन
Ukraine Russia war too. So that's the reason why the United States, the United Kingdom, France, Italy, Japan, West Germany and Canada formed the G7 1976, so that the non-communist power would come together to discuss the economic concern with the time of included inflation region following organization of the petroleum exploitation countries and oil igum. So this is how the G7 summit has been conducted rather than G20, where which organization, which non-communist power will comes into discussion, and west, we can say that, and such like United States, Italy, Japan, Western Germany, Canada, these countries usually plays a very important role when we discuss about global unity in undemocratic architecture. So these 2 points refers to each other. One is global community or global unity and undemocratic architecture. Then after G20 summit, here G20 summit, if we discuss about the third number point, these when we discuss about that, अगर हम G20 के बारे में डिस्कस या फिर G20 समिट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो रूसिया को इवोल्यूट करने या फिर रिमूव करने के लिए कहा गया है, where India will be placing from December 1, 2022. Okay, so here China has opposed that. So that's the reason why we have Western nation का influence कैसे usually होता है whole world में, where India's role plays a very important role or crucial role to become a mediator, to become a friendly with both the United States as well as with the Western nation. So that's plays a very important role when we usually place about G20 summit. So here China has opposed them. India will chair of G20 from December 2022 or will be G19 then. So meanwhile India is being heteroed by official from the US and the UK to support their citation to Russia. India has also so far refused to condone. So with reference to the UK and USA, India is being a keynote, or we can say the India क्या बोलते हैं, उनका उनका हाईलाइटेड हो गया है, उनके बारे में अगर देखें उनका नेशनल एडवाइजर्स के अंतर्गत इंडिया हाईलाइट हो गया है, क्योंकि जो रूसिया को सपोर्ट करता है यूएस एंड यूके, उनको शामिल नहीं करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इकोनॉमिकल सेंसेशन में, बायलैटरल ट्राइस में. तो दिस पॉइंट्स नीड टू बी मेंटेन और दिस पॉइंट नीड टू बी crucially evaluated. That's the reason why G20 summit has been placed. Then after global vaccination drive, so if we discuss about global vaccination drive in simple word, जो कि धनवान है वो खरीद सकता है और दे सकता है, जो धनवान नहीं है, who is poor at all, who even afford to do something, he cannot get that. So nations which is poor, nation which has very low economy, definitely they cannot afford. Nations which has high economy, they can afford and give. That's the simple reason. If there will be a interference with WTO as well as the World Bank, they might get that. Then after building ecosystem, तो बिल्डिंग इकोसिस्टम का बारे में अगर डिस्कस करेंगे, फाइनल टॉपिक भी हो सकता है, जो कि फाइनल पॉइंट भी हो सकता है. उसके बाद 3 पॉइंट जो कि मैं हिंदू एयरटेल से ही लिया हूँ, रिच डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल टेंशन एंड अनडेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर. तो लास्ट नंबर पॉइंट के बारे में जब डिस्कस करेंगे, बिल्डिंग इकोसिस्टम जस्ट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप, जस्ट टू मेंटेन ties with all the nation countries, all the world's countries, and to have a very good affectionation, very good unison, or you can say that कैसे हम शामिल हो सकते हैं, हर एक को कैसे हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा when we discuss about building the ecosystem of the governance. So this is how the last number, or we can say that 1 2 3 4 5 number point usually signified about building the ecosystem. अनडेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर, जैसे कि मैं बोला, इसमें ही यूनाइटेड नेशन, उसके बाद टेरर अटैक्स ऑफ, वी कैन से दैट हियर जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, G8 एंड द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. तो इन सभी के बारे में हम तो डिस्कस कर चुके हैं अनडेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर. देन आफ्टर सोशल टेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सो दीज 2 पॉइंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वी कैन से प्रोपोर्शनल टू ईच अदर भी हम बोल सकते हैं. सोशल टेंशन एज वेल एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. सो सोशल टेंशन जैसे कि हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, उसके बाद हाउ
सोशलिज्म, लिबर्टी, यूनाइटेड सिविलाइजेशन, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सोशल टेंशन में, सोशल टेंशंस के बारे में आएगा, उसके बाद redistribution of power, you have already know about that, right? So let me end the session here itself. Thank you.